Today, what happened? Today date is the 9th of April 2022 and time is 06:54 p.m. Now again and again you're asking me that Imran Khan as a prime minister is safe or not inside the parliament related to number game. No trust vote or no confidence. I'm clearing my point. I don't want any other repeated argument on this, and that is, it's never a subject for me. Whether he will able to prove his number inside the Pakistani parliament as a prime minister or not, it's never my concern. My concern is, which I earlier told you in my videos, that is, the real secret operation always remains secret. To hunt down economical terrorists. Yes. It's never a subject for me. What and who and when a person came there as a prime minister, my investigation will continue. Because what's the topmost crime is not murder, it's economical crime. Because once the economy of any nation will start dying, means that nation's population will going to suffer. This is the main concern of HRC also, Human Rights Commission. The economist terrorist are the heinous one than to those who love to open fire in public. Mr. Nawaz Sharif did demonetization and seized entire Pakistan's earning on date of 11th June 2015. And after him, the two more prime minister took oath as an two more person took oath as a prime minister was the same from Pakistan Muslim League Nawaz. According to our investigation, because here in India I am also investigating the same case. The thing Mr. Modi done here, he did demonetization. Again and again I am saying the same. Why I did so, how I did so, who is teaching me to arrange these all things, not your concern. Right? Whatever the political scenario inside the Pakistan, I have to save a person who is not guilty. This is my argument only. Imran Khan is not guilty. Yes, I was a deputy commissioner of Central Vigilance here in India. And as an of, because when Mr. Nitish Kumar came in power in Bihar, he was doing the same situation, and he took oath as a chief minister of Bihar. He was in mood to hunt down Lalu Prasad Yadav. Whatever the economical crime they did was not that much levels punishable act.
He opposed Lalu Prasad Yadav's Chara Ghotala. He threw him out from Janata Dal United and became a supremo of Janata Dal United, Mr. Nitish Kumar. See, in very simple word, but Lalu Prasad Yadav created Rashtriya Janata Dal and proved his again popularity in Bihar. M.Y. Samikant, Muslim and Yadav, not a subject. He became rail minister and shows entire world his talent as a rail minister. Whether it's a right or wrong, I'm not discussing right now. But according to media report, he brought out railway first time out of the loss and hold down a revenue surplus more than ever railway owns. That popularity is not adjustable for Nitish Kumar in his mind, and it was not safe for his career. So he assigned and designed a game to sabotage complete family of Lalu Prasad Yadav. Right? The blunder did by Mr. RJD was a Chara Ghotala, which was around 100 crore or 1,000 crore, maybe. That we can investigate. But as an Central Vigilance Deputy Commissioner, Mr. Mariam, listen to me very carefully. I'm not a very easy person. In subject of officer ranks, I was a Deputy Commissioner 03 of Central Vigilance. And on that rank, I visited to Bihar to arrest Mr. Nitish Kumar with my complete force. Don't ask me to be inside Pakistan. Right now, I am entire world's Central Vigilance Chief. Nitish Kumar and other powers in Bihar. Firstly, they shows their very honest face. Suddenly, they took a stance and visited to Pakistan. This is the matter of investigation also in my file. Why he did so? Because here in India, whomsoever will visit to Pakistan, we directly throw them in garbage. IB never gave them clearance, but he was a chief minister. Same if anyone is from Islamic world visit to Israel, you won't allow them to be inside the Islamic world. Am I right or wrong? Now the Nitish Kumar is also under scanning. I use my mind. Suddenly Nitish Kumar think because it was a habit of Mr. Modi, whomsoever will come under the scanning of Central Vigilance or Central Agencies, Mr. Modi gave them power or safe custody. Nitish Kumar allow him to join as a part of NDA. Mr. Modi was in mood to remove the cases. With the help of Enforcement Directorate, I ordered to demolish Enforcement Directorate because they were
using by Mr. Modi. Yes, he directly said, don't worry, I have an enforcement directorate. Suddenly, a news came in media, a Muslim MLA. I told you earlier the same thing. Now, everyone here in India and in Pakistan, listen me very carefully. You all are under scanning. And as an Central Vigilance Chief, I was the person who take honor back from United States of America because of Donald Trump as a vigilance nation. Since then to till date, I never received even a one file of against Mr. Khan under scanning of Central Vigilance. Now, if I'm give, I told them to in media means in my videos to everyone that I never received any kind of objection by Central Vigilance in case of Mr. Khan. And why should I ask him that he's under scanning? Because he never tried to steal money of government. Because Central Vigilance duty is just in very simple sentence. We have right to investigate only those money which is belongs to central government and in more to stole by any politician, bureaucrats, police officer. That's it. Not for a private organization's money. We are responsible to trace central government's money. That's why I took investigation of demonetization. Now you understand why I'm telling you again and again that demonetization is a blunder done by Mr. Modi, and the same was done by Mr. Nawaz Sharif inside Pakistan. Whatever and whomsoever will do corruption inside the central government, it's under my scanning because I'm Central Vigilance Chief. Now, if these all boys, Nikki Kitties, think so, that I just made a certificate of no. That was created by them for me only to be in power as a Central Vigilance Deputy Commissioner. Not for you all. Surrender your certificate to the office. It is a waste for you. It was a game designed by central government. That's why as I visited Bihar as a Central Vigilance Commissioner, I told to Mr. Mukesh, don't worry, in 2019, we will hunt a very big fish. Mr. Mukesh was a person who firstly informed me that Modi is a person who is taking bribe from the private companies and companies. It was an information by a state government employee, and I took it very seriously. Not because just he is my brother. That's why I honor him 180 crore rupees. 180 crore, 180 crore rupiah. It was just a simple ratio of commission because we are Central Vigilance Commission. To him,
because he was a whistleblower. Mano ya na mano. Since then, Mr. Modi was under scanning of my sharp eyes. He did demonetization. That's why I raised a question, not just because a social life's a whistleblower who are against the corruption. No, sir, no. You are wrong. You are wrong. I'm a Central Vigilance Deputy Commissioner and I'm honored as a chief of Central Vigilance. So this is my responsibility to tell government and all authorities that this was done by Mr. Modi is completely wrong and the demonetization was a blunder. That's why the economy of India is going slow down. The same I informed to Mr. Khan now. I have the power to announce him as an Interpol officer. Inside your parliament, don't think so. I'm here as a guard of him to save as a prime minister. I don't care. Investigation will continue. Madam Maryam Nawaz Sharif and Reham Khan and Rabi Pizada in the subject of officer rank. You're talking to a officer who's in rank of Central Vigilance Commissioner. I'm a vigilance officer and very bad. That's why I ordered 40,000 Delhi police officers to be suspended and terminated immediately because I told them I'm Central Vigilance Commissioner. You don't have any right to check me. Now what? They are enjoying their retirement before the age. Now no one has a right inside the parliament, not Mr. Speaker, you also. Don't think so, I'm just a Twitter handler. Hitesh Revan, I'm a Central Vigilance Commissioner Deputy. And I'm the best one in the entire world. This is my responsibility to trace every rupees of central governments. What is Mr. Shaktikant Das? Is nothing for me. What you are, Mr. Parvez Sharif? What you are, Mr. Bloody Hamza? Bastard. You wanna know my rank? I have a full and fledged right to investigate you. And your bank accounts, your belongings, even I can put my hands inside your wife's panty, bastards. What brand she wear? If it belongs to government's money, this is my responsibility. It's a matter of 30 trillions. No one has any bloody rights. Don't tell me and don't teach me like in a stupid gangs. Mr. Khan, don't worry. I'm very much responsible officer. In Hindi, इन बहन की लोड़ियों को नंगी करके चेक कर लूंगा। माँ की लोड़ियां लवेबल पहनती हैं या भोसड़ी की क्या कहते हैं डॉलर की। पैसा कहाँ है? किससे पूछ के? मैंने कहा था, हैं? तेरे बाप का पैसा है? हैं? 2 लाख करोड़ में बहन के लोड़े बिहार की जनता का था, नीतीश कुमार। आराम से बहन का लोड़ा पता क्या बात कर रहा मेरे को। What was the answer of Mr. Nitish Kumar to me? Oh, so what यार,
if it's a 2 lakh crore, if it's an investigation, then first give us to, oh ho, भाग्य लड़ो, तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा प्ले बॉय में, पैसा तो वसूल लो, तुम जानते नहीं हो मेरे को अभी। समझ में आई? तू क्या सोच रही है अंजना ओम कश्यप? तेरी माँ का भोसड़ा, तू जानती नहीं हम विजिलेंस वाले हैं, भग फाड़ देंगे तुम्हारी। अब किसी को कुछ पूछना है? चुपचाप रिजाइन करके ना सरेंडर टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तुम भागे लड़े, 2 मिनट में औकात बता दूंगा तुम सबकी, 2 मिनट में। बहुत हरामी किस्म के ऑफिसर हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा। और मेरी इन्वेस्टिगेशन में किसी ने दिमाग लगाया है ना तो याद रख लेना, नवाज शरीफ चाहिए तो चाहिए। समझ में आई? और कुत्ते के बच्चों तुम सुन लो, दिल्ली पुलिस हो चाहे इंडिया पुलिस हो, अगर ये अरेस्ट नहीं किया ना तुमने तो बैन के लोड़ो तुम्हारी माँ चुत्ती नजर आएगी प्ले बॉय में। पैसा तो मैं वसूल कराऊंगा इस देश का, तुम तक तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। समझ में आ गई? बाप का घर समझाए बे? नोटबंदी करके आराम से बहन के लोड़े पैसा निकाल लेंगे। नीतीश कुमार माँ की चूत मारी, इसकी बहन के लोड़े ने क्या करा? आराम से पैसा, आराम से भोसड़ी वाला ट्रेजरी में से एंट्री गायब कर दी 2 लाख करोड़ की। बहन के लोड़े ने धीरे धीरे करते करते 22 लाख करोड़ कर दिया। 7 लाख करोड़ रुपए मोदी ने एक और भेजे थे। ये खुद मोदी की वर्डिंग थी पोडियम पे, बिहार गवर्नमेंट को भेजे थे, नहीं भेजे थे, बस, पर वो पैसा पहुंचा नहीं। हमें ना आईबी वाला मत समझना यार, रॉ वाला। माँ की लोड़ियों अगर हमारे, हाँ ये मत सोचना अपने बाप का पैसा तू छुपा लोगी। माँ की लोड़ियों हमारे रिमांड रूम में ना 0 डिग्री महसूस करा दूंगा, नंगी करके टांग दूंगा पंखे से। मारते बहुत हैं हम, समझ में आई? कि दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, पैसा सी भेड़ चोद दूंगा मैं नवाज शरीफ की। समझ में आई? 9 लाख करोड़ की बात है इन एंटायर वर्ल्ड। वहां चुराने जा रहा था लंदन बार बार है, बैठ के लोड़ा बर्फ में लगा दूंगा एक एक को। लगा रिमांड रूम में बर्फ की सिल्लियां मंगवा। ये बैठ का भोसड़ा मारा इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। बदमाश हो तुम, उठा बिलावल को भी। तुझे हम बताते हैं भोसड़ी का रिमांड रूम क्या आता है, किसे लेके आए 100 बर्फ की सिल्लियां लेके आ। ये बैठ की चूत मारी इनकी। उठा मोदी को भी लेकर पहन के लौड़े को, देखता हूं कौन बचाता है इसको। और नहीं तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ऑफिसर को उठा पहन कर कुत्ते के बच्चे को। साफ सीधी बात है, तू नहीं और इनके घर पहुंच, इनके 20 बच्चे उठा ले। बोले या तो इन्वेस्टिगेशन करेगा या पहुंचेगा, तेरी मर्जी है। समझा? उठा इसको ना, अभी नहीं बोला, अब तो शुरू है। उठा। कौन पुलिस वाला कह रहा था वे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? लोकसभा स्पीकर को उठा ले। ये ना माने उसके घर से 20 बच्चे उठा ले, लगा ले बर्फ में बहन के लोड़ों को। बर्फ में लगाना आता है? मैं सिखाता हूँ। पहले गांड में मार, तबीयत से बहन के लोड़ों को लट, फिर सिल्ली पे बैठा, बांध दे। मरता नहीं है आदमी, लाइफ सेविंग मंगा ले। पैसा 2 दिन में तोते की तरह बकने लगा था नीतीश कुमार। 2 दिन में, 2 दिन में तोते की तरह बक रहा था नीतीश कुमार। अब ये बकेगा बहन का लोड़ा। अंजना उनका सबको लेके आ। आईबी वाली पूछताछ मत समझियो, ये सेंट्रल विजिलेंस वाले हम। हाँ मैं पता क्या करता हूँ, पहले बोलता हूँ मार झापड़ खींच के बंदे के,
नहीं पढ़ता ना फिर ऑफिसर के मारते तो ऐसे मारते हैं। लेगा इन पहन के लोड़ों को। और कौन कौन है मीडिया में? तेरी माँ के चूत सुधीर चौधरी, भोसड़ी के मुझसे पंगा लेगा तू हैं? लेगा इसको विजिलेंस के रिमांड रूम में। डैड के लोड़ा जेबी के वर्ल्ड फोरम तेरे बाप ने बनाई थी। और कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में नहीं आना चाह रहा है? कोई बात नहीं बेटा, बहुत टाइम है हमारे पास। तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी है। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुम्हारे को। पैसा हमारी माँ भी चुदवा के वसूल लूंगा, बहन के लौड़ो, मैं असली वाला हूँ। समझ में आई? उठा नहीं। अरे इनकी बहन की चूत, इनके संसद का ड्रामा ही खत्म है आज। संसद का सिक्योरिटी ऑफिसर को उठा ले। संसद में कैसे घुसे भाई? आ जाओ इसको। ना किसी को नहीं उठाना, हमारी जिम्मेवारी है ना, विजिलेंस वाले हैं हम, हमारी जिम्मेवारी है। JSR सिक्योरिटीज, उठा संसद के सिक्योरिटी ऑफिसर को, लेकर इसको उसके 20 बच्चों के साथ। चल चालू हो जा। इसको ले आ। दिल्ली CP का कौन है? दिल्ली CP कौन है? इसको उठा, इसके 20 बच्चों को उठा। 2 बंदों को लेके आज विजिलेंस के रिमांड रूम में। इनकी तो कैसी बहन चोतता हूँ मैं। अंजना को, ओम कश्यप को उठा के ला। तेरी माँ की चूत बयान की लोड़ी, मैं पहनाता हूँ तुझे ब्रांडेड। मैंने कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई ईवल साइड। इमरान, ऐसे बनते हैं विजिलेंस ऑफिसर। तुझे पता क्या ड्यूटी करना, तुझे आता ही नहीं है। 400 उठवा ले, बर्फ की सिल्लियाँ मंगवा ले। बर्फ में कैसे लगाते हैं? 5 बर्फ की सिल्ली लगा के ना ऊंची रख लियो, अब बांध दे बर्फ की सिल्ली में, अब फिर मार पहन के लोगों को। ऐसे नहीं, 20 बच्चे समेत मारते हैं इनको, अकेले नहीं। उठा लो इन बहन के लंडों, इनकी माँ की चूत। पैसा कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है भाई, तुम्हारा नहीं है। मैंने मुकेश अंबानी को उठाने की बात कही एक बार भी, रतन टाटा को, अदानी को नहीं कहा ना? बात खत्म। कहा इनको नहीं, बस जो चाहिए वो चाहिए। समझ में आई? नवाज शरीफ को लेकर रिमांड रूम में। और कोई काम नहीं है इमरान आपके पास? पूछ लियो बाकी को, किसी और को भी लगना है बर्फ की सिल्ली में। हाँ भाई रेहाम, मरम नवाज, पूछ ले इमरान प्यार से। इनकी कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रही है बुद्धि और फुद्दी, जब बहन की लड़ों की ऐसी माँ चोतते हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी है इमरान, और कुछ नहीं सीखा मैंने ज़िंदगी में, और कुछ नहीं सीखा। समझ गया? मंगा ले बर्फ की सिल्ली। अरे बहन के लोड़ो, स्वागत है तेरा सेंट्रल विजिलेंस में। मेरे को प्रेशर बना रहे, कह रहे इमरान के खिलाफ। अब नहीं है भाई उसके खिलाफ केस सेंट्रल विजिलेंस में, मैं कैसे कह दूं? कैसे कह दूं? तू गवर्नमेंट चला, गवर्नमेंट तो चला, हमें कोई मतलब, पैसा कहाँ है? हमारी कोई और ड्यूटी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गायब हुआ, तुम्हारी बहन छूट गई समझो। तुम रिश्वत ले रहे हो, हम नहीं पकड़ते। अगर बेटा गवर्नमेंट का आया हुआ पैसे में जरा सी हेरा फेरी हुई, वहीं समझो तुम्हारी माँ चोदने के लिए हम खड़े। नवाज शरीफ को दिखा इमरान, विजिलेंस का रिमांड रूम बना ले। और भी पूछ लियो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। हाँ भाई, किसी और की इच्छा है? बुला ले विजिलेंस वालों को, ले चल। मैं नवाज शरीफ को ढूंढ, कहाँ से, कहीं कहीं से भी ढूंढ के ला इसको। उठा ले इसकी बीवी को भी। नवाज शरीफ बुढ़िया हो जा कोई हो। हाँ अब इसको खेल नहीं पता अभी। पुलिस वाला मत समझिए हमारे को। इसको ले गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर को। इंडिया में इन्हीं दो को उठाओ। चल, जब बर्फ में हम लगाते हैं आज। अंजना का सबको लेके यार, सुधीर चौधरी को, 4 जने हो गए। चल फटाफट काम चालू कर।
रिमांड 5 दिन की है। और सब पूछ लो सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा हुआ है। बोल तेरी भी इच्छा है, तेरी भी इच्छा है, कर दे पूरी। बोला अगर नंबर तेरा ही है तो रुक जा बहन के लोटे सुब्रमण्यम स्वामी, तेरी भी बहन छोड़ देंगे। तू जानता नहीं है विजिलेंस वाले हम गए। ये तो तुम भूल ही गए थे। हम याद दिलाएंगे तुम्हें। नीतीश कुमार को दोबारा लेके आ, बोला था ना रिजाइन कर, 20 बच्चे समेत लेके आ इसको।